हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू ACME कॉमर्स अकेडमी। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रेफरेंस शेयर्स, सेक्रेटरियल प्रैक्टिस स्टैंडर्ड 12th सेकंड चैप्टर, प्रेफरेंस शेयर्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एंड व्हाट आर द फीचर्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, ये आज हम डिस्कस करें। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय प्रेफरेंस शेयर्स? ये चीज़ हम हमारे लास्ट वीडियो में जो इक्विटी शेयर्स के फीचर्स थे उसमें भी मैंने स्टार्टिंग में यही चीज़ बताई थी कि व्हाट डू यू मीन बाय प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर्स आर दोज शेयर्स विच एंजॉय सर्टन प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट, जिनको प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलती है। किसके रिलेटेड टू पेमेंट ऑफ डिविडेंड। सो दे हैव अ प्रेफरेंशियल राइट टू रिसीव द डिविडेंड बिफोर इट इज पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर। सबसे पहले डिविडेंड किसको मिलेगा? आउट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आफ्टर पेमेंट ऑफ टैक्स, प्रोविजन ऑफ डेप्रिसिएशन, ये सब प्रोवाइड करने के बाद जो प्रॉफिट होती है दैट इज कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। तो आउट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट सबसे पहले हम डिविडेंड किसको पे करेंगे? प्रेफरेंस शेयर। उसके बाद में जो भी अमाउंट है इट इज पेड टू। सेम वे preference shareholders also gets preferential treatment regarding repayment of capital in case of liquidation of the company. अगर कंपनी का liquidation होता है, in that case after payment of all third party liabilities who will be paid first? Preference shareholders, and then if anything is remaining then it will be paid to equity shareholders. So preference shareholders जो है they will enjoy preferential treatment related to payment of dividend and repayment of कैपिटल। क्लियर? सो आपको मीनिंग समझ में आया होगा व्हाट डू यू मीन बाय प्रेफरेंस शेयर्स। नाउ लेट अस कम टू द फीचर्स। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ प्रेफरेंस? सी, जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है दे आर द को ओनर्स ऑफ द कंपनी। इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स एंड कंट्रोलर ऑफ द कंपनी। इक्विटी शेयर्स क्या करते हैं? कंपनी को कंट्रोल करते हैं बाय एक्सरसाइजिंग देयर वोटिंग पावर्स। वेयरएज जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है दे आर द को ओनर्स, दे आर नॉट द कंट्रोलर। They don't have normal voting rights. उनको कोई voting rights नहीं होते unless and until if their rights are affected. Like for example, if preference shareholder do not receive dividend for continuous 3 years, लगातार 3 साल तक उनको dividend नहीं मिला, then they can participate in the general meeting and they can vote at the meeting on the resolution. Otherwise, they don't have any normal voting rights. In normal condition, उनको कोई voting rights नहीं होते. Equity shareholders, they have voting rights. Now, preference shares में कौन इन्वेस्ट करता है? Those investors who are cautious. See, equity share is related to risk. When we buy equity share, हम क्या कर रहे हैं? We are investing in risk capital. क्योंकि equity share क्या है? Risk capital है. But preference shares में कौन इन्वेस्ट करेगा? Those investors who are cautious, who want safety of their investment, जिनको regular income चाहिए. See, in case of equity shares, dividend की कोई guarantee नहीं है. If profits are high, आपको अच्छा डिविडेंड मिलेगा एट हायर रेट। अगर प्रॉफिट कम है तो आपको कम डिविडेंड मिलेगा, और अगर प्रॉफिट नहीं है तो कोई डिविडेंड नहीं मिलेगा। ये तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर के साथ भी होगा, क्योंकि अगर डिविडेंड नहीं है तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को भी डिविडेंड नहीं मिलेगा। बट द रेट ऑफ डिविडेंड इज फिक्स्ड, सो देयर इज एश्योर्ड इनकम। सपोज 8% प्रेफरेंस शेयर्स है तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर नोज कि मुझे ऐसे डिविडेंड हर साल मिलने वाला है, प्रोवाइडेड कंपनी इज इन प्रॉफिट। तो आइए देखते हैं इसके फीचर्स क्या है। फर्स्ट फीचर क्या है? प्रेफरेंस फॉर डिविडेंड, जैसे अभी हमने डिस्कस। सो प्रेफरेंस शेयर्स हैव द फर्स्ट चार्ज ऑन द डिस्ट्रीब्यूटेबल अमाउंट ऑफ एनुअल नेट प्रॉफिट। डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट मींस टोटल प्रॉफिट लेस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, पेमेंट ऑफ टैक्सेस, ये सब होने के बाद, ये सब पे होने के बाद जो अमाउंट हमारे पास लेफ्ट ओवर है दैट इज कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट. So preference shareholder gets preference related to payment of dividend. They are paid dividend before the dividend is paid to equity share. सबसे पहले डिविडेंड किसको मिलेगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पे करने के बाद जो भी अमाउंट है इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू इक्विटी शेयर होल्डर. सो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स दे एंजॉय प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ डिविडेंड. सेकेंड पॉइंट है हमारा, सेकेंड फीचर है हमारा, प्रेफरेंस फॉर रीपेमेंट ऑफ कैपिटल at the time of liquidation of the company. कंपनी लिक्विडेट हो रही है, डिसॉल्व हो रही है. आफ्टर पेमेंट ऑफ ऑल थर्ड पार्टी लायबिलिटीज, द फर्स्ट प्रेफरेंस विल बी गिवन टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स. देयर कैपिटल विल बी रीपेड. जो भी अमाउंट हमने इन्वेस्ट किया है प्रेफरेंस शेयर्स में, दैट अमाउंट विल बी रीपेड along with outstanding dividend if any.
अगर कोई डिविडेंड आउटस्टैंडिंग है, लेट अस से 1 साल का डिविडेंड आउटस्टैंडिंग है, लास्ट ईयर का डिविडेंड नहीं मिला था, तो वो डिविडेंड के साथ आपको कैपिटल का रीपेमेंट सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलेगा और उसके बाद में इक्विटी शेयर होल्डर। देन थर्ड इज फिक्स्ड रिटर्न। सी रेट ऑफ डिविडेंड इज फिक्स्ड। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया रेट ऑफ डिविडेंड इज फिक्स्ड। अगर 8% प्रेफरेंस शेयर है या 9% प्रेफरेंस शेयर है तो हमें वही परसेंटेज डिविडेंड मिलेगा इररेस्पेक्टिव ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट करेगी तो भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को उतना ही डिविडेंड मिलने वाला है एट द फिक्स रेट, और अगर कंपनी को कम भी प्रॉफिट है और कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया है तो भी कंपनी वही रेट से डिविडेंड देने वाली है। सो द रेट ऑफ रिटर्न इज फिक्स्ड इन केस ऑफ प्रेफरेंस। तो जो डिविडेंड पे होगा इट इज ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट। अगर कंपनी को प्रॉफिट होगी तो ही कंपनी डिविडेंड देगी, कंपनी को प्रॉफिट नहीं है देन कंपनी विल नॉट पे डिविडेंड। इक्विटी शेयर होल्डर हो या प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो, किसी को भी डिविडेंड नहीं मिलेगा। डिविडेंड इज पेड ऑलवेज ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट। थर्ड पॉइंट इज नेचर ऑफ कैपिटल। नाउ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो है वो टेम्पररी कैपिटल है, जस्ट नॉट परमानेंट कैपिटल लाइक इक्विटी शेयर्स। बिकॉज प्रेफरेंस शेयर्स जो है वो हम एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए इशू करते हैं, लाइक 3 years, 5 years और मे बी 10 years. Sometimes it can be used, it can be issued for 20 or even 30 years. But it is for a particular period. It is not a permanent capital for the company. Company will have to redeem the preference capital after certain period. Like for example, if company is issuing redeemable preference shares for a period of 3 years, तो जैसे 3 years हो जाएंगे, 3 years completed, company will have to refund the capital of preference shareholder with the outstanding dividend. So preference capital, preference shares do not provide permanent share capital. They are redeemed after certain period of time. A company cannot issue irredeemable preference shares. So under the provision of Companies Act, no company in India can issue irredeemable preference. Company will have to issue only redeemable preference shares. Now let us set market value. Now market value does not change. Preference share की market value में कोई changes नहीं होते हैं. Since the dividend is payable at a fixed rate. Dividend क्या होता है? Dividend pay होता है at a fixed rate. There are no fluctuations. Equity shares की market value and face value are different. अगर face value 10 है but market value में भी you can say एक example लेते हैं HDFC बैंक. Market उसकी face value 10 rupees में issue किया होगा. But at market value is somewhere around 1680 something. So both are different. But preference share की face value और market value में कोई changes नहीं होगा because dividend is always paid at a, so there will be no changes in the market value and face value. There are no differences, right? Next is voting right. Preference shareholders do not enjoy normal voting rights because the rate of dividend is fixed. They do not enjoy any control over the company, over the affairs of the company. However, they may exercise their voting rights only if their rights are affected. If their rights are affected, only in that case, they can participate in the meeting and exercise their voting power. Like for example, if company has not paid dividend for continuous 3 years, then in that case, they have a voting power. They can participate in the meeting of the company and they can exercise their voting power. Next point is risk. Now investors who are cautious generally purchase preference. जिनको safety चाहिए, safety of capital, जिनको continuous और steady returns चाहिए, ये preference shares के कुछ advantages हैं. So these shares are beneficial to those shareholders who are looking for fixed rate of income during the recession or during the depression period when markets are down. During such period these shares are very much advantageous. Next is face value. Now face value of preference shares is relatively higher than the equity share. Normally face value होती है around rupees 150 or rupees 100. Rights or bonus issue. Now preference shareholders are not entitled for right or bonus issue. These benefits are available only to the equity shareholder. And last nature of investor, preference share attracts moderate type of investors who are conservative, those investors who are thinking about the safety of their income, those who are cautious, जिसको अपना capital safe रखना है,
Only such type of investors will invest in the preference share. Those shareholders who are willing to take risk, they will not invest in preferences, they will prefer equity share. Clear? तो आई होप आप लोगों को व्हाट डू यू मीन बाय प्रेफरेंस शेयर्स और उसके फीचर्स समझ में आए होंगे. हमने क्या क्या फीचर्स डिस्कस किए. लेट अस रिपीट इट अगेन. फर्स्ट इज they enjoy preference for the payment of dividend. They also enjoy preference for the repayment of capital. Then it's a fixed source of income, like your rate of dividend is fixed every year. You know at what rate you are going to receive the dividend, unlike equity share capital. And nature of capital. Capital is safe capital. Only cautious investors are investing. They may invest in the preference shares. And market value, normally market value में कोई changes नहीं होता है. Why? Because of the fixed rate of dividend, market value remains as it is. But in case of equity shares, market value keeps on changing because the rate of dividend. उसके बाद में हमने देखा voting rights. Normally they do not enjoy any normal voting right, but when their rights are affected, they can exercise their voting powers by participating in the meeting. Then risk is normally less because the rate of dividend is fixed. And secondly, these kind of shares are very much beneficial during the depression period because of the fixed rate of income. उसके बाद में face value is normally high compared to equity share. It is around ₹100. Rights or bonus issue, these benefits are not available to preference shareholders. And nature of investors, normally moderate investors, those who are willing to go for the safety of the capital, they will only invest in the preference. So I hope आपको वीडियो पसंद आया होगा. अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए. थैंक यू वेरी मच.